Welcome to another session of Quwwat-i Amrāḍ Pathology in Unani Medicine. हमने अब तक अमराज़ मक़दार की कमी और ज़्यादती के असबाब को भी देख लिया है और अमराज़ सूए तरकीब के दीगर असबाब पर भी गौर किया है, बात की है। इस सेशन में आज़ा की आदद में जो ज़्यादती हो सकती है उसके असबाब पर और उसकी कमी के असबाब पर बात की जाएगी। तो आज़ा के आदद में ज़्यादती के क्या असबाब होते हैं? तो बिफ़ोर स्टार्टिंग मैं पहले ये आपसे कहूँगा कि आप ख़ुद से भी गौर कीजिए। अब तक हमने बहुत सारे असबाब पर बात की है, तो अब हमारा ज़हन इस एतबार से भी चलना चाहिए कि हम ख़ुद सोचें कि इस पर्टिकुलर डिसीज़ के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ मतलब एक थॉट प्रोवोकिंग काम है, सिस्टम है कि बिफ़ोर आप जब किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, काफ़ी हिस्सा आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो अब आप ख़ुद से भी इस बारे में पहले सोचिए कि इसके क्या पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं, और फिर आप अगर उसको पढ़ते हैं तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुँची है। तो अगर आपने सोच लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि आज़ा की क़यादत की ज़्यादती के असबाब क्या हो सकते हैं। पहली चीज़ है मादे की कसरत, जिसके सबब क़ुव्वत मुसव्विरा आज़ा को तादाद में ज़्यादा बना दे। सिमिलर मेकैनिज़म हमने पढ़ा था अमराज़ मक़दार में, आज़ा की मक़दार की ज़्यादती के असबाब में, कि उसमें क़ुव्वत मुसव्विरा मादे की कसरत की बिना पर, मादा भी कसीर था और क़ुव्वत मुसव्विरा उस पर गालिब थी। यही हाल यहाँ भी है कि मादा भी कसीर है और क़ुव्वत मुसव्विरा जो उसको बनाने वाली है, जो उस मादे को जो जनीन की स्टेज में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ये बयान किया जाए, जनीन की स्टेज का है कि जनीन की स्टेज में जो मादा वहाँ पर पहुँचता है उस पर असर करने वाली क़ुव्वत मुसव्विरा और क़ुव्वत मौलिदा होती है। क़ुव्वत मौलिदा ने तो पहले मादे को आज़ा की शक्ल देने की सलाहियत उसमें पैदा कर ली कि वो आज़ा की शक्ल में कन्वर्ट हो सकता है, और अब क़ुव्वत मुसव्विरा जो काम करती है, पहले क़ुव्वत मौलिदा काम कर चुकी है और अब क़ुव्वत मुसव्विरा काम कर रही है। तो क़ुव्वत मुसव्विरा का काम ये होता है कि वो आज़ा को उसकी शक्ल दे। तो अगर मादा ज़्यादा है और क़ुव्वत मुसव्विरा भी उस इतनी पावरफुल है कि वो ज़्यादा मादे पर काम कर सकती है, तो उसको वो शक्ल देती है। अलबत्ता ये हो सकता है कि वो या तो मक़दार में बढ़ा दे उसको या तादाद में ज़्यादा बना दे। तो जिस एतबार से वो ऑर्गन है उस एतबार से उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। ये हमने मक़दार की ज़्यादती में भी पढ़ा है, अमराज़ शक्ल में भी हमने पढ़ा है। अमराज़ शक्ल में हमने ये पढ़ा था कि अगर मादा ज़्यादा है लेकिन क़ुव्वत मुसव्विरा के अंदर ज़ौफ़ है, तो मादे की कमियत या कैफ़ियत की ख़राबी की वजह से ये ख़राबी में एक चीज़ ये भी आ जाती है कि मादा कमियत में ज़्यादा है और क़ुव्वत मुसव्विरा इस काबिल नहीं है कि वो पूरे मादे पर काम कर सके, तो वो उसको बिगाड़ देती है, उसकी जो शक्ल है वो सही नहीं बन पाती। तो एक बहुत ही फ़िलोसॉफ़िकल तिब्ब यूनानी का ये पैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो क़ुव्वत मुसव्विरा कसरत मादा की बुनियाद पर आज़ा को या तो मक़दार में बढ़ा देती है या तादाद में ज़्यादा बना देती है। तो यहाँ चूँकि हाथ की बात है और हाथों में कई उंगलियाँ होती हैं, तो क़ुव्वत मुसव्विरा मादे की कसरत की वजह से एक उंगली ज़ायद बना देती है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि आज हमारे पास जो जेनेटिक लेवल पर इंफॉर्मेशन है जेनेटिक्स में, तो उसमें ये बात होती है कि हाँ जी, प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप होता है और वो गवर्न करते हैं कि किस ऑर्गन को कैसा बनाना है। जो पेरेंट्स से एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई है, उसी बुनियाद पर जो है ना एक मैसेज जाता है उन प्रोटीन मटेरियल को, और जीन्स होती हैं वो गवर्न करती हैं कि कौन से ऑर्गन को कैसा बनाना है। तो ये मैकेनिज़्म आज के ज़माने का मॉलिक्यूलर है और पहले अतिब्बा ने इसको लॉजिकली बताया था। तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट है। तो हम दोनों से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अलबत्ता
ہم اسباب کے اعتبار سے غور کر رہے ہیں، تو اب اس کے اسباب جب غور کر لیں گے تو اس کے تھیراپیوٹک اپروچ پر بھی غور کریں گے کہ سبب کا ازالہ کیسے کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سبب کا ازالہ کنجینٹل پرابلمس میں چونکہ کرنا مشکل ہے، اس لیے ایک مشکل چیز ہوتی ہے کہ جو چیز بن چکی ہے اس کو کیسے چینج کیا جائے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ارلی پریونشن کے طور پہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو ارلی پریونشن کے طور پر ہم نے یہ لوکیٹ کر لیا کہ مادہ قوت مصورہ زیادہ مادے پر کام کر رہی ہے، اس وجہ سے یہ ہو رہا۔ تو اس کی پھر جب علاجی بات ہوگی تو وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ اطباء نے اس کو کیسے ٹارگٹ کیا ہے۔ تو یہی الٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسین کا فلسفے کا کمال ہے کہ جب اس کے فلسفے کو آپ جانیں گے تبھی اس کے الٹرنیٹیو موڈ آف ٹریٹمنٹ پر بات کریں گے۔ جو ہمارا یہ ذہن جاتا ہے کہ ہم بیماریوں کے اسباب اور اس کی ڈائگنوسس ماڈرن طریقوں سے کر لیں اور ٹریٹمنٹ ہم اپنے طریقوں سے کریں، تو وہ اس لیے فیل ہو جاتا ہے کہ ہمارا کانسیپٹ ہی الگ ہے اور ہمارے سارے ٹریٹمنٹ پرنسپلس اسی کانسیپٹ کے حساب سے ہیں۔ تو یہ جب کانسیپٹ سمجھیں گے تبھی ہم کچھ پلان کر سکیں گے کہ اس کا تھیراپیوٹک پرنسپل کیا ہے، اطباء نے جو بتایا ہے وہ طب یونانی میں کیا رہا ہے اور کیسے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ تو ایک ریسرچ کویشچن بنتا ہے اور اس پر ہم کام کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے قوت جاذبہ کا قوی ہونا، جس سے کثیر مقدار میں مادہ جذب ہو جائے۔ یہ بات بھی ہم نے قوت امراض مقدار کی زیادتی میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے قوت جاذبہ کے زیادہ ہونے سے کثیر مقدار میں مادہ جو ہے وہ وہاں بھی جذب ہوا تھا اور وہاں مقدار بڑھ گئی تھی۔ البتہ ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ مقدار میں زیادتی ہونے کی بجائے عدد کی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو قوت جاذبہ کا قوی ہونا اور جس سے کثیر مقدار میں مادہ جذب ہو جائے اور مادہ جذب ہونے کی وجہ سے اس کے عدد میں زیادتی ہو جائے۔ تو عدد میں زیادتی کے اسباب میں جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیومر بھی ہو جائے۔ ٹیومر بھی ایک طرح کا اطباء نے اس کو عدد کی زیادتی کا سبب بتایا ہے، اس کی ایک شکل بتائی ہے۔ تو قوت جاذبہ کا قوی ہونا جس سے کثیر مقدار میں مادہ جذب ہو جائے اور پھر عدد بھی اس کی کسی چیز کی بڑھ جائے، تو اس طرح سے یہ چیزیں غیر طبی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو آرگن آلریڈی بن چکے ہیں ان میں تو اب چینجز نہیں ہوں گے، لیکن جو ایکوائرڈ پرابلمس ہیں وہ اس طرح کے ایب نارمل پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ پھر تیسری چیز ہے کسی خلط کا کمیت یا کیفیت کے اعتبار سے غیر طبیعی ہو جانا۔ کوئی کیفیت کے اعتبار سے یا کمیت کے اعتبار سے خلط بڑھ جائے۔ تو ایک چیز ہے قوت جاذبہ زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ کسی اور وجہ سے کوئی خلط وہ اس کی یا تو کیفیت بڑھ گئی ہے یا بدل گئی ہے یا کمیت بدل گئی ہے۔ تو دونوں کی مثال دیکھیں گے۔ کیفیت کی مثال ہے کرم شکم۔ کرم شکم میں کیفیت کیسے بدل جاتی ہے؟ کرم شکم میں کیفیت ایسے بدل جاتی ہے کہ جو وہ ہوتے ہیں دیدان عما ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اطباء نے بیان کیا ہے کہ یہ کیڑے جو پیٹ میں پیدا ہو جاتے ہیں خاص طور سے بچوں کے ماں میں، تو یہ بلغمی رطوبات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ بلغم کے اندر ایک طرح کی لزوجت عام طور سے پائی جاتی ہے، اور وہ جو بلغم پیٹ میں ہوتا ہے اس کے اندر بلغم لزج جو ہوتا ہے، لیزدار بلغم، تو وہ ان کیڑوں کے فارمیشن میں اور ان کے پروڈکشن میں معاون ہوتا ہے۔ تو خلط کی کیفیت بدل گئی ہے، بلغم جو ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے ایسا ہو گیا ہے جو کیڑوں کے فارمیشن کے لیے پریڈسپوزنگ فیکٹر ہے۔ تو اب یہ خلط جو ہے وہ ایک عدد میں زیادتی کر رہی ہے نا۔ تو ایک انسان کے اندر ہی کچھ اینیملس اور کچھ یہ اینیملس تو نہیں کہیں گے اس کو، جو آرگینزمس فارم ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ عدد میں زیادتی کی ایک مثال ہے۔ اس لیے اطباء نے یہ کہا ہے کہ طب یونانی میں پریکٹس کی جاتی ہے کہ کرم شکم کا علاج کرنا ہو تو اس کے لیے بلغم کا علاج کیا جائے، اور اگر بار بار بچوں میں کرم شکم کی ایک طرح سے شکایت مل رہی ہے، بار بار ان کو وہ دوائیں دینی پڑ رہی ہیں جو ڈی ورم کرنا پڑ رہا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے، وہ اس سے تو فائدہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے بہتر ایک اپروچ یہ بھی ہے کہ وہ دوائیں دی جائیں جو بلغم کا ازالہ کرنے والی ہیں، پیٹ میں بلغم کو جمع کرنے والی نہ ہوں،
ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज़ किया जाए जिससे पेट में उस तरह की खिल्त फॉर्म हो रही है। और उसकी एक मिसाल है कि बलगम को कैसे ख़ता किया जाए, उसकी एक मिसाल ये है कि अदरक के मरकबात इस्तेमाल किए जाएँ, जैसे जवारिश ज़ंजीबील है, शरबत ज़ंजीबील है। तो ये मामूलात मतब में शामिल है और इसका इस्तेमाल करना पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत मुआविन है। तो कैफ़ियत का आप यहाँ देखिए कि खिल्त की कैफ़ियत की ख़राबी की वजह से भी आदत में ज़्यादती हो सकती है, और कमियत में ख़राबी की वजह से आप देख रहे हैं कि सलाह या रसूली बन रही है। इसमें दोनों चीज़ें हैं, कमियत और कैफ़ियत दोनों ही एक तरह से सलाह में खिल्त की तबी गैर तबी होने की वजह से ही वो ट्यूमर बनना शुरू होता है, और ज़ाहिर है कि उसमें कैफ़ियत के साथ साथ कमियत भी बढ़ जाती है, खिल्त ज़्यादा जमा होने लगती हैं और ट्यूमर फॉर्म होने लगता है। तो ये केस हमने पहले देखा था उस सूए तरकीब की मिसालों को, अमराज़ आदत को बयान करने के लिए। तो ये जो केस है इसमें देख रहे हैं आप, अदद बढ़ा हुआ लग रहा है, एक की बजाय 2 सर नज़र आ रहा है, और इसकी वजह जो है वो सलाह या ट्यूमर, उसकी खिल्त की ख़राबी है। ठीक है, तो एबनॉर्मली ये खिल्त का ख़राब होना ये भी एक अहम सबब है आज़ा की अदद में ज़्यादती का। So we will see the asbab of ज़्यादती in adad of आज़ा, numerary disorders. These are numerary disorders. So in numerary disorders, what are the causes of increase in numbers and what are the causes of decrease in numbers? As you have seen earlier in asbab or causes of voluminous disorders, the causes of increase in number, similarly we can see here the causes of increase in number of organ, numerary disorders. So excess of madda, due to which Quwwat-i forms organ with extra numbers. So the same mechanism and the same etiology we have seen in ज़्यादती of miqdar, where the material in the fetal stage is excess in the quantity and excess in the amount, and Quwwat-i which is meant for the formation of organ is dominant, so that it can utilize the whole material coming or present there. So it will lead to formation of an organ of increased volume or increased size. Similarly, sometimes Quwwat-i instead of increase in the volume, it increases the number. For example, in polydactyly, the mechanism is explained from the Unani context here, and this is because of Quwwat-i. And you might be knowing Quwwat-i and Quwwat-i are two important powers working on the fetus during embryonic life. Quwwat-i is working for it is a generative faculty, generative power. It leads to the formation, it induces the ability in the material to form the organs, and Quwwat-i is power which actually forms the organ. So this is a mechanism, and I want to state here that we know earlier the features of Unani medicine. It is a holistic concept. It works on the concept of holism instead of molecular approach. So in present era, we know the cause of polydactyly. Poly means more, dactyly means fingers. So increase, you can see here, increase in the number of fingers. These are total 6 instead of 5. So we know that because of genetic signaling, genetic makeups, and alteration in genetics system, or the information, genetic information which is coming from the parents, the child may develop polydactyly, but it is in the context of molecular approach or in
cellular or genetic approach, and in Unani medicine the concept is a philosophical, holistic philosophy based approach. So what is the application of this? Sometimes we discuss the causes according to mechanism, according to the concept of modern medicine, and we try to apply the Unani therapeutic approaches, Unani drugs to deal with that particular disease, which we have understood according to the modern mechanisms. Although it is suitable and it might help sometimes, but in large case, in major areas, this mechanism of understanding the diseases according to modern medicine and treatment according to Unani medicine is not fit formula. So in this concept and in this case, a research question arises: why, if genetic change, you could not do genetic change, or even after genetic engineering, such kind of disorders could not be addressed? What are the alternative approaches? So if you want to see the alternative approaches, Unani medicine, one of the alternative system medicine, you have to see the philosophy, what is the cause mentioned for that type of disorders in Unani medicine, and accordingly what is the therapeutic approach mentioned in Unani system of medicine. So that time we have to see the alternative causes and then alternative approaches. So it actually work in research models, and it helps for solving the questions, solving the major issues as an alternative approach. Another cause is a strong Quwwat-i called absorbing more madda. So we have seen earlier in Miqdar also, Amrāḍ al Adad. So if Quwwat-i is more, it will absorb more material, and it will increase the size in case of Amrāḍ al Adad, and here it may increase the numbers of organ. So for example, in a tumor, the Quwwat-i is more abnormally, so it may absorb more material and it will lead to auram. So auram is a kind of is a kind of not only Miqdar but also it a kind of Amrāḍ al Adad. For example, the tumor or Salah is a kind of increase in numerical disorders. You will see with another mechanism, another pathogenesis. So sometimes health is abnormal in terms of quality and quantity. So here you can see these numbers are 2. So these 2 it is visible as 2. So in such cases the numerical disorders are caused by abnormal increase in the health, as well as in this case both number as well as both quantity as well as quality of health is increased or abnormal. Quantity is increased and quality is abnormal, kafiyat is abnormal. So apart from Quwwat-i, the health also plays for formation of tumor abnormally, and one explanation of increase in number is for worm infestations. So abnormal quality of tumor or of abnormal quality of humor or abnormal quality of health may lead to worm infestation. How? Because according to Unani system of medicine, the worm infestations are caused because of balgam, and especially balgam lazij, or the balgam which is having sticky nature. So such kind of balgam is accumulated in the intestine of especially children, and that balgam favors the production of worm infestations, favors the production of worm in the intestine. So it is because the quality of health is abnormal. It is now balgam lazij or abnormal balgam. So abnormal balgam which has been increased, which is increased in the intestine of the child, it favors the production of worm. So for the therapeutic approach, what is taken, we used to target these balgam with the help of
hard and yabis drugs, because we know balgam is barid and ratb. So on the principle of ilaj bizid, we use hard yabis medicine. For example, apart from deworming, or you used to deworm the such children to protect the child from worm infestation. But this approach is very helpful in practical scenario. The balgam can be treated with the help of Haryabis. For example, Haryabis medicine, for example, zanjabil. So it is just for your interest. Uh, Zanjabil is very helpful, either Sharbat Zanjabil, Jawarish Zanjabil, and similar drugs are helpful for evacuation and elimination of balgam from the uh, intestine, and this is helpful for the uh, long term treatment of worm infestations. So these are certain examples of ज़्यादती इन अदद अफ़ाज़ा. इसके बाद हम देखेंगे कि आज़ा की अदद में कमी के असबाब क्या हो सकते हैं, किन असबाब से आज़ा के अदद में कमी हो जाती है. आज़ा के बनने के वक्त मादा कम हो या उन आज़ा को बनाने वाली क़ुव्वत मुसव्विरा कमज़ोर हो, यही बात हमने देखी है आज़ा के मिक़दार में कमी के असबाब में. तो जब मादा कम होगा या क़ुव्वत मुसव्विरा कमज़ोर होगी, तो दोनों सूरतों में मादा कम है, क़ुव्वत मुसव्विरा उस पर काम करते करते उसने या मक़दार को कम कर दिया या फिर नंबर ही कम कर दिए. तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनमें नंबर्स नहीं होते हैं, तो वहाँ मक़दार कम हो गई. जहाँ नंबर्स होते हैं, जैसे फिंगर्स हैं, तो वहाँ पर ये कम हो गई. उंगलियाँ जैसे हैं, वो उंगलियाँ कम हो गई. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो टोटल 4 फिंगर्स हैं. तो ये 4 फिंगर्स इंस्टेड ऑफ 5 की जगह सिर्फ 4 हैं. तो उसकी वजह ये है कि या तो मादा कम रहा होगा या फिर क़ुव्वत मुसव्विरा उस पर कमज़ोर रही होगी. तो इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन ये है कि ऐसे केसेस में हम अर्ली प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि वो चीज़ें इस्तेमाल करके, एक रिसर्च क्वेश्चन है कि वो चीज़ें इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं जो कि इन दोनों कॉजेज़ को एड्रेस करने वाली हो. क़ुव्वत मुसव्विरा पर काम करने वाली जो दवाएं हो सकती हैं या जो उसकी तदाबीर हो सकती हैं, वो तिब्बी यूनानी के उसूलों से उसको निकाला जा सकता है. तो ये इस एतबार से किया जा सकता है कि ऐसी बीमारियां आमतौर से फैमिली में चलती हैं और उस एतबार से इस पर रिसर्च की जा सकती है. दूसरी चीज़ यह है कि बैरूनी तौर पर आज़ा का कट जाना या चोट लगना या शदीद ठंडक लग जाना. तो ये कॉज हमने वहाँ भी देखा था कि अमराज़ मक़दार में कमी के असबाब में, उसी तरह अमराज़ आदद में भी कमी के असबाब में ये शामिल है कि बजाय मक़दार के एतबार से आज़ा के कटने के अगर कुछ उंगलियां कट जाती हैं, तो उसमें भी वही सारी चीज़ें होती हैं कि नंबर्स कम हो जाते हैं. तो ठंडक लगने से भी ये हो सकता है कि कोई एक उंगली ख़त्म हो गई, उंगली ख़राब हो गई और उंगली ख़त्म हो गई, तो अदद कम हो गया. प्रीवियस एग्जांपल में वो दोनों चीज़ें थी, मक़दार में भी कमी थी और अदद में भी कमी थी फ्रॉस्ट बाइट की वजह से. तो इसे समझाया जा सकता है. दूसरी चीज़ यहाँ तीसरी चीज़ है कि अंदरूनी तौर पर उफ़ूनत या ताकुल से उज़्व का कोई हिस्सा ख़राब हो जाए. हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उफ़ूनत क्या होता है और ताकुल क्या होता है. तो ताकुल की वजह से उज़्व का कोई हिस्सा ख़राब हो जाए और उसकी वजह से नंबर्स कम हो जाए. तो नंबर्स कम होने की एक मिसाल तो उंगलियों की है, और दूसरी मिसाल ये आप देख रहे हैं कि बालों और मुताफ़िन आज़ा का गिर जाना. उंगलियां गिर जाएं या 2 लिम्स हैं, 2 में से एक पैर में इतना ज़्यादा ताकुल हो गया कि वो पूरा पैर ही ख़त्म हो गया, काटना पड़ गया, तो 2 की बजाय 1 पैर रह गया, तो ये अमराज़ अदद में शामिल होता है. या फिर बालों का गिर जाना, तो ज़ाहिर है कि बाल के नंबर्स होते हैं, अगरचे काउंटेबल नहीं होते, लेकिन ज़ाहिर है कि नंबर्स के एतबार से उनमें कमी आ जाती है. बाल घने होते हैं, बाल जो है वो कम घने हो जाएं तो भी आदमी परेशान होता है कि बाल हमारे पहले अच्छे थे अब कम हो गए. तो जो नंबर्स में कमी आ रही है ये परेशानी की बात हो जाती है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो एक केस है, यहाँ पर बाल बिल्कुल निकल गए हैं
इसी तरह ऊपर के हिस्से में आप देख सकते हैं। तो ये जो इसकी क्या वजह है, क्यों ये बाल गिर जाते हैं, तो उसमें कोई ना कोई फ़ुनत होती है, कोई ना कोई ताफ़ुन वहाँ होता है जिसकी वजह से आदत में कमी आ गई है। तो उस ताफ़ुन का इलाज कर लिया जाए तो वो दूर हो सकते हैं। Then asbab of naqs in adad of adha. What are the causes of decrease in the number of organs in the numerary disorders? So first cause is similar to that of decrease in the miqdar or volume of organ. The madda is less, hence the quwwat-i musawwira, which is working on that particular fetal stage on that particular organ is not able to form the organs in complete numbers, or it is weak, and matter is okay but it is weak, and that's why it is not working, it could not complete the numbers, it forms a lesser number of organs. So this is a type of it is a kind of cause of naqs in adad of adha. So the term is used congenital oligodactyly. Oligo means lesser or less, dactyly less fingers. And another cause you can see here, the numbers of organs, fingers 1, 2, 3, 4. So these are four numbers of fingers. It is called as oligodactyly. Another cause is external accidental injuries or severe cold. So it is also discussed in the miqdar kami in miqdar of adha, naqs in miqdar of adha, and we are also discussing here in cases of kami in adad of adha in numerary disorders. So it may happen that due to cold exposure fingers may be lost, so or in accidental injuries some fingers or some organ may be lost. So in that cases the numbers are decreased. And then internal ufunat, ta'akkul, causing organ damage, any kind of ufunat, we have discussed it earlier, putrefaction or sepsis. Ta'akkul means a kind of erosion which developed in the organ causing damage to them. So such kind of damage may be either amputation, one organ or one finger may be completely amputated and removed from the body. So either one limb may be amputated in excessive damage, or in large major gangrene to affecting the whole limb or major part of the limb. It may happen that only one or two finger may be damaged, may be amputated. Similarly, hair fall, you can see this case, the patch of hair loss. So as the numbers decrease, hairs are in numbers, although not countable, but the numbers may be decreased if the patch, the whole patch of root of the hair is not permitting to grow the hair, or it is not favorable for hair growth. So that part of the scalp or that part of the organ where hair must be grown and it is not being grown, so it will lead to decrease in the number of hairs, and such kind of disorders are included in numerary disorders or decrease in the number of organs.